Welcome friends. Today in this video, which is the lecture number 5, I am going to discuss fundamental of resistive circuit. Means जो भी हमारा रेजिस्टिव सर्किट होता है उसका फंडामेंटल क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। ये जो लेक्चर नंबर 5 है ये किसका पार्ट है? चैप्टर नंबर 1 का जो डीसी सर्किट है उसका ये लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, और ये जो है ये पार्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसी का पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ रेजिस्टिव सर्किट इसमें हम लोग क्या देखेंगे? जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नंबर 1। उसके बाद क्या देखेंगे? उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन। यदि रेजिस्टिव सर्किट है तो स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन हम लोग कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, और सम न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सिंपली यही मेनली दो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक, टुडेज टॉपिक। ओके, फंडामेंटल ऑफ रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल I like to explain the excitation. एक्साइटेशन का मतलब क्या हो? मान लीजिए डीसी एक्साइटेशन है या फिर एसी एक्साइटेशन होता है। ठीक है, तो एक्साइटेशन का क्या मतलब है? द करंट एंड वोल्टेजेस आर currents and voltages are set up in circuit elements because of the presence of sources। मीन्स अगर मान लीजिए कोई सोर्स है उसके कारण से अगर वोल्टेज या करंट सेटअप होता है सर्किट में, देन दी सोर्स वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन सिंपल हो गया। अगर कोई सोर्स है तो उसके कारण से जो वोल्टेज या करंट सेटअप होता है सर्किट में, तो उस सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन। तो इसमें डीसी एक्साइटेशन का मतलब क्या हो गया? सोर्स क्या होना चाहिए? डीसी एक्साइटेशन का मतलब क्या हो गया? सोर्स क्या होना चाहिए? डीसी। मतलब इस तरह से भी सिंबल दे सकते हो, ये वोल्टेज सोर्स एक्साइटेशन हो गया, डीसी वोल्टेज सोर्स एक्साइटेशन हो गया। अगर करंट सोर्स होगा तो आप इस तरह से सिंबल दे सकते हैं। ठीक है, इसमें जो करंट सेटअप होगा सर्किट में वो किस एक्साइटेशन का? डीसी करंट सोर्स एक्साइटेशन के कारण सेटअप होगा। तो दिस इज अबाउट द एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन से आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना कि एक्साइटेशन क्या है नहीं है, समझे? तो ये एक्साइटेशन के बारे में हो गया। नाउ वी विल मूव फॉर द मेन टॉपिक, दैट इज द fundamental of resistive circuit. In this, first of all we are going to discuss series and parallel combinations of resistances। ठीक है, तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ आप बताइए, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हो, ठीक है, इसका मैंने ये रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल बहुत अच्छे से मैंने क्लास 12 की फिजिक्स में डिस्कस किया है। अगर आपको अच्छे से समझना है, बेसिक से समझना कुछ ज़्यादा है बेसिक से, तो आप क्लास 12 का फिजिक्स का जो सीरीज है करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस के बारे में वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए ये 2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज में? आर इक्विवेलेंट। मान लीजिए R1 है, ये R2 है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। सीरीज में क्या होता है? जस्ट सिंपली
we will add all resistance in series, that is known as the सीरीज। और इम्पोर्टेंट पॉइंट सीरीज के बारे में क्या है, सीरीज कब समझिएगा कि ये सर्किट जो सीरीज में है या पैरेलल में। मान लीजिए ये वाला सर्किट, ठीक है, यहाँ से आपका एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है इस तरह से, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सीरीज में है दोनों। आपको क्या करना है, मान लीजिए ये वोल्टेज सोर्स है तो इससे करंट मान लीजिए आई करंट जा रहा है। अगर आई करंट जाएगा और इससे मान लीजिए I1 करंट जा रहा है और इससे मान लीजिए I2 करंट जा रहा है, तो इस सर्किट से हम लोग क्या देख सकते हैं, I इक्वल टू I1 इक्वल टू I2 मीन्स ऑल करेंट्स आर इक्वल। मीन्स अगर करंट सेम है, करंट अगर सेम है, करंट अगर सेम फ्लो हो रहा है, सेम फ्लोज, देन दैट विल बी योर सीरीज कनेक्शन, ठीक है। अब देखिए सीरीज का ये हो गया, मान लीजिए ये V है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज डिवाइड होगा वो क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, और R2 के अक्रॉस वोल्टेज V2। अब देखिए करंट क्योंकि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, इसलिए मार्क करेंगे हम लोग, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, समझे। और वोल्टेज का V1 एंड V2। तो करंट सीरीज कॉम्बिनेशन हो रेजिस्टेंस का, तो करंट क्या हो जाएगा आपको, सेम हो जाएगा। मीन्स दोनों रेजिस्टेंस में क्या होना चाहिए, सेम करंट फ्लो होना चाहिए। अगर वोल्टेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब बताइए, लेकिन करंट तो सेम हुआ, लेकिन क्या होता है कि वोल्टेज आपका, वोल्टेज विल बी डिवाइड, वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड हो रहा है, V इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, V1 प्लस V2, KVL भी लगा दोगे तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 ही आएगा, ठीक है। और वोल्टेज डिवाइड कैसे हो रहा है, जो मेन वोल्टेज है V, वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक V1 और दूसरा V2, दो वोल्टेज में ये डिवाइड हो रहा है। सो दिस इज V1 प्लस V2, ठीक है। समझ में आया, ये सीरीज और पैरेलल का सिंपल है। अब इसका डेरिवेशन कैसे हो गया, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 कैसे होगा बताइए, कुछ आइडिया है? बहुत ही सिंपल है। देखिए ये मान लीजिए एक सर्किट है, मेन सर्किट, और एक इसका सिंप्लीफाइड सर्किट क्या हो जाएगा आपको इस तरह से, ठीक है। ये सब हम क्लास 12 के फिजिक्स में डिस्कस किए हैं। अगर आपको डिटेल तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, कोई वो नहीं है। आई हो गया, और ये मान लीजिए R इक्विवेलेंट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 है, ठीक है। समझ में आया नहीं है। और V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, V इक्वल टू R इक्विवेलेंट इंटू आई लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट इंटू कैपिटल I। और V1 को हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V1 को बताइए, V1 को I1 इंटू R1 प्लस V2 को I2 इंटू R2। तो अब देखिए, क्योंकि I1, I2 और I तीनों क्या है, सेम है, तो तीनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कट। सो R इक्विवेलेंट कैन बी रिटेन एज R1 प्लस R2। ये सिंपल डेरिवेशन हुआ, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस अगर और भी रेजिस्टेंस है तो और सब रेजिस्टेंस को भी आप ऐड कर सकते हो। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। समझ में आया ये सीरीज कैसे हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे, सीरीज का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और भी है। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सीरीज में क्या हो रहा है, करंट तो सेम हो रहा है लेकिन वोल्टेज क्या हो रहा है, डिवाइड। सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला, वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला। ये क्या बोलता है, क्या मान लीजिए आपको V1 निकालना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R1 के। जैसे V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, R1, पहले तो टोटल वोल्टेज आप लिखिए, V1 जो है ना, V1 जो होगा ये वाला वोल्टेज, ये जो मेन वोल्टेज टोटल वोल्टेज, उसका इनटू फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। जो मेन वोल्टेज है उसका टोटल वोल्टेज है, उसका क्या होगा, कुछ फैक्टर जो है ना V1 होता है, वो क्या फैक्टर है, V1 इक्वल टू R1 बाय R1 प्लस R2। ये फैक्टर है V1 के लिए, और V2 के लिए आपको है V इंटू क्या हो जाएगा, कौन सा फैक्टर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा। सो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो R2 बाय R1 प्लस R2, दिस इज योर V1 एंड V2। दिस इज सिंपल वोल्टेज डिवीजन। ये फॉर्मूला क्या है, किसके लिए, जब आपका दो रेजिस्टेंस होगा
सीरीज में कनेक्टेड होगा तो आप तुरंत मीन्स फास्टली यू कैन कैलकुलेट the how much voltage will be drop across resistance R1 and R2. So we can simply calculate V1 is equal to total voltage, that is V into जो उसका जिसके अक्रॉस निकालना है, that is R1 divided by total resistance. समझ गए? Similarly for V2. Now how you derive this one means V1 equal to V into R1 by R1 plus R2. कैसे आप derive करोगे? It is very simple. कैसे? V1, what we can write about the V1? V1 can be written as from this circuit diagram. You can tell V1 equal to I1 into R1. Simple. I1 into R1. R1 into I1. I1 is what? It is nothing but the I. I means I equal to I1 equal to I2. Okay. And what about the I? I क्या है? इस सर्किट में करंट कितना है? इस सर्किट में करंट कितना है बताइए? इस सर्किट में करंट कितना बोल सकते हो? I इक्वल टू आप लिख सकते हो R1 इंटू I मीन्स V बाय R इक्विवेलेंट. ओके सिंपल. सो व्हाट वी कैन राइट V इंटू R1 बाय R इक्विवेलेंट. व्हाट इज R इक्विवेलेंट? R इक्विवेलेंट तो आपको पता है R1 प्लस R2. R1 प्लस R2 simply. So this is your V1. In similar way we will calculate about the V2. V2 what we can write? I2 into R2. We can write R2 and I2 is same as I1 is same as I. So R2 into I, that is I. What is I? I is V by R equivalent. Simple. So this will be V into R2 by R equivalent is nothing but the for two resistance R1 plus R2. That is too simple. Okay, this is easy to understand. Okay, I hope you understood all the concept of this series circuit. Okay, it is simple multiplication and division. Okay, nothing else. It is all about your series. Now we will move for the parallel combination. Okay, now what about the parallel combination? That is all about series. Now we will move for the parallel combination. Parallel combination of resistance. In parallel, what do you mean by the parallel? Parallel means current divides. करंट जब भी डिवाइड हो तो इसका मतलब आप क्या समझ जाओगे? ये पैरेलल कम्बिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और पैरेलल कम्बिनेशन में जितना भी है पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा. एंड सेम पोटेंशियल और वोल्टेज अक्रॉस. तो पैरेलल कम्बिनेशन बताइए क्या होगा? मान लीजिए ये मान लीजिए V है, ये आपका R1 है, ये R2 है. इसमें करंट कुछ जाएगा, मान लीजिए इसको I1, इसमें करंट कुछ जाएगा, दैट इज I2. सो फॉर दिस वन इसको इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे बताइए? एक तो वोल्टेज सोर्स हो गया, समझ में आ रहा है ना ये कैसे निकालना है, और एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ये समझ में आया ना कैसे हुआ? तो आर इक्विवेलेंट जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो क्या होता है? सिंपली टेल मी क्या होता है? वो सिंपली 1/R1 प्लस 1/R2. अब बताइए, मान लीजिए I1 इसमें जा रहा है करंट में, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस वोल्टेज ड्रॉप V1. सिमिलरली I2 अगर जा रहा है ऐसे, तो ये क्या होगा? प्लस माइनस V2 हो जाएगा. तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 लिख सकते हैं. कोई डाउट आपको? ना. नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज V. अब देखिए V इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इस सर्किट से बताइए? V इक्वल टू R इक्विवेलेंट इंटू I लिख सकते हैं. सो V कैन बी रिटन एज R इक्विवेलेंट इंटू I. व्हाट अबाउट द V1?
V1 कैन बी रिटेन एज, V1 को क्या लिख सकते हैं हम, I1, आपको तो ये समझ में आया ना, वोल्टेज सबका सेम है ना। आई करंट, ये मान लीजिए करंट कितना है आई, तो आई कैन बी रिटेन एज, क्या लिख सकते हैं आई मान लीजिए ये जो नोड है, इस नोड पर हम लोग क्या लिखेंगे, KCL, इनकमिंग को प्लस और आउटगोइंग को माइनस, इनकमिंग को प्लस आउटगोइंग को माइनस, I1 minus I2 equal to 0. So from this what we can write, I equal to I1 plus I2. What can be written as I is the current. So from this what we can write, V by R equivalent is I. So V by R equivalent equal to I1. What we can write about the I1, I1 is the voltage divided by resistance, so V1 by R1. Similarly I2, what we can write, V2 by R2, simple. As V equal to V1 equal to V2, so what we can write, this voltage will be cancel out, and hence what it will be, it will be 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2. It is the simple mathematical calculation, okay. And the plus dot 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 means this is your parallel combination. For the parallel combination, what we can do, we can take the inverse of the all the resistance. And also one important point here is that 1 by resistance is equal to G, means conductance. So what we can write, G means conductance equivalent equal to 1 by R equivalent can be written as equal to G1 plus G2 plus dot 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 dot, okay. Understood now, okay. This is clear, okay. Now in this circuit, that is the parallel combination में क्या हो रहा है, आपका करंट डिवाइड हो रहा है, मीन्स वी विल कैलकुलेट द करंट डिवीजन फॉर्मूला फॉर दिस सर्किट, ओके. वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला फॉर द सीरीज सर्किट एंड द करंट डिवीजन फॉर्मूला फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो and also important point, R equivalent for the two resistance is equal to R1 into R2 by R1 plus R2. For two पैरेलल रेजिस्टेंस, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसको क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट, दोनों को प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सम, ओके. करंट डिवीजन बताइए क्या होगा, करंट डिवीजन फॉर्मूला इसके लिए वेरी सिंपल एंड इजी. करंट डिवीजन फॉर्मूला, हाउ वी कैन फाइंड आउट, सिंपली वी कैन सी द डायग्राम लाइक दिस वन, okay. In this current is your I2 and this is R2 and this is I1 and this is R1 and this is your I, this is your voltage source connected across V, voltage drop V1 and voltage drop here V2, okay. Now current division formula, I1, what we can write, I1 current division means how we can write the parallel current or branch current in term of the main current is I. How to relate this one, tell me. I1 what we can write, I1 what we can write, yeah, I2, let we will define I1 can be written as V1 by R1, it is simple, okay. So this can be written as 1 by R1. What about the V1, what is your V1, tell me what is your V1, what is your V1, tell me. This is your R equivalent, this is your current I and this is your V. So V1, as we know that the for the parallel combination, V1 equal to V2 equal to V, and this V can be written as I into R equivalent. For the two resistance, R equivalent is nothing but the R1 into R2 by R1 plus R2. Therefore what we can write here, V1 is equal to current I into R1 into R2 divided by R1 plus R2,
Okay, so therefore what we can write, I1 equal to I into R1 will be cancel out with the R1, so the remaining terms, that is R2 by R1. This is nothing but your the formula for the I1, current division formula for the I1. Now next we will calculate for the I2. I2 will be means this branch current will be your directly proportional to the this current. दिस मीन्स जो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है उसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर इसमें जीरो रेजिस्टेंस है या शॉर्ट सर्किट, जीरो रेजिस्टेंस मीन्स क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, जीरो हो गया रेजिस्टेंस, तो ये करंट क्या होगा, क्योंकि इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो ये I1 भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मीन्स सभी करंट क्या किससे पास हो जाएगा, R2 से हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि I1 क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो सिमिलरली फॉर I2 व्हाट वी कैन कैलकुलेट, I2 है इधर, तो इसका मतलब पैरेलल में कौन है, R1, सो वी कैन राइट I टोटल करंट इंटू R1 डिवाइड बाय R1 plus R2. This is about your I2. How to derive this one? This is very simple. What we can write, V2 by R2, and what is V2? V2 is nothing but the V is nothing but your I into R1 R2 by R1 plus R2, and this is R2 is already there, R2 cancel out, so R1 by R1 plus R2. So this is very important, current division and the voltage division, because in the circuit analysis you will use it frequently, so you need to remember this concept. Okay, now we will solve some numericals based on this concept, okay. So let's start with our first numerical. Question number 1. For the circuit analysis or basic electrical, always use a scientific calculator, okay. In examination, university examination, it is allowed, it is valid to carry your scientific calculator in exam, okay. But for the objective examination, competition examination, in some competition exam you cannot carry your scientific calculator, and in some examination you can carry your scientific calculator, okay. So that's depend, so you need to be careful, but always try to take your scientific calculator during examination. If they allow, you take, otherwise you keep that outside, okay. So this is a simple circuit, ABC point is given, and it is a resistance, so 20 ohm, it is also 40 ohm resistance given, and this resistance is also 10 ohm resistance given, this is 30 ohm resistance, and this is your 5 ohm resistance, this is your 8 ohm resistance, this is your 12 ohm resistance, and this is 20 ohm resistance. What is the question? Question is, you need to find the R equivalent between AB and BC node. AB कौन सा है, ये A है, ये B, इसके बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकालना है, एंड B तो ये हो गया और C ये हो गया, तो BC के बीच, तो इसमें दो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, अक्रॉस AB एंड अक्रॉस BC, ठीक है। व्हाट अबाउट द AB, इसका मतलब क्या हो गया, अक्रॉस मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हुआ, क्या आपको इस तरह से देखना है इस सर्किट को कि AB से जो है ना आपको कोई सोर्स कनेक्टेड है, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से सोर्स कनेक्टेड है और यहाँ से करंट आपका फ्लो हो रहा है, और BC को बारे में आपको नहीं सोचना है जब आप AB के अक्रॉस फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। BC को भूल जाइए कि C भी कोई पॉइंट है। आप जब इधर से आप कैलकुलेट करोगे इस साइड से, मीन्स AB के अक्रॉस, तो आपको क्या दिखेगा, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए,
ये दोनों जो रेजिस्टेंस, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों का देखिए करंट क्या डिवाइड हो रहा है। मान लीजिए यहाँ से अगर करंट कोई जा रहा है तो ये करंट यहाँ भी जाएगा, ये करंट यहाँ भी जाएगा, सेम ही करंट जाएगा, सेम ब्रांच है। सो इट इज़ इन सीरीज। ये हो गया आपको सीरीज में हो गया, ठीक है। ए बी के अक्रॉस फाइंड आउट करना है, किसके अक्रॉस, नंबर ए अक्रॉस ए बी, मीन्स आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, ठीक है। तो ये निकालना है। तो ये दोनों क्या हो गया सीरीज में। जब ये सीरीज में हो जाएगा तो इसके साथ ये क्या होगा, ये पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। जब ये पैरेलल में हो जाएगा तो इस दोनों का इक्विवेलेंट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। जब ये सीरीज में आ जाएगा और क्योंकि इसके साथ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। फिर उसके साथ ये क्या होगा, सीरीज में, और ये सीरीज में हो जाएगा। फिर ये सब उसका जो इक्विवेलेंट होगा वो किसके साथ पैरेलल में होगा, इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। मतलब अगर आप इसको फिर से अगर ड्रॉ करो, रीड्रॉ करो डायग्राम को, ये मान लीजिए ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब इसके अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये आपका कितना है, 40 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए ए से कनेक्टेड है, क्या है, एक रेजिस्टेंस और कनेक्टेड है, दैट इज और 20 ओम, ठीक है। और एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जो सी से कनेक्टेड है। मान लीजिए नीचे में क्या है, बी टू सी भी एक कनेक्टेड है, बी टू सी कितना 30। सो दिस पॉइंट इज सी। क्योंकि ए से आपका 20 गया, 20 से फिर से 10 गया है, और 10 से सी पे ये कनेक्टेड है थ्रू वन रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम टुवर्ड्स सी, इस तरह से, ठीक है। ये सी पॉइंट है, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट इज आपका, तो ये सी हो गया, 30 हो गया। अब सी से क्या है, सी से आप देखिए ये तो सीरीज में हो गया, तो ये सीरीज में कितना आ जाएगा आपको, 12 + 8 20 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ये पैरेलल में है और ये बी। सो बी टू सी तो कनेक्ट कर दिए, ठीक है, बी टू सी कनेक्ट हो गया। मान लीजिए इस पॉइंट को आप डी मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। अब क्या है, बी से डी है, बी से कहाँ है, डी, बी से डी करो और सी से डी करो, ठीक है। तो मान लीजिए ये बी पॉइंट है, बी से डी के लिए कितना है, बी से डी के बीच में आपको 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये मान लीजिए डी 5 ओम रेजिस्टेंस है, बी टू डी, बी टू डी 5 ओम हो गया। और सी से डी, सी से डी 2 रेजिस्टेंस हो जाएगा, एक तो 20 ओम और एक जो है इसका इक्विवेलेंट 12 + 8 20 ओम, मीन्स 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में, सी से डी। तो सी से डी एक हो गया और एक और सी से डी हो गया। ये कितना है, एक है 20, एक है 20, कुछ इस टाइप से होगा। आपको इसके अक्रॉस निकालना है, तो क्या करोगे, फर्स्ट देखिए, आप लोग को ध्यान देखना है, बस कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल में, पैरेलल में होगा 2 रेजिस्टेंस। अगर इक्वल रेजिस्टेंस है, इक्वल वैल्यू है, पैरेलल में है तो हाफ हो जाएगा। अगर 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच पैरेलल है और इक्वल रेजिस्टेंस है तो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 है तो आप इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, 20 × 20 + 20। सो और वी कैन सिंपली डिवाइड हाफ, क्योंकि दोनों इक्वल है, 2 ब्रांच है, तो ये कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट 10 हो जाएगा। तो 10 हो गया ये। अब 10 के साथ जो है ये 30 क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी से डी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट 10, और 10 और ये 30 क्या हो जाएगा, सीरीज में। और 30 नहीं है, ये 5 है शायद, इट इज़ नथिंग बट द 5 बिटवीन बी एंड डी, बिटवीन बी एंड डी इज हाउ मच, 5। सो between B and D is nothing but your 5, and B and C, in between B and C your 20, okay, like this one. Sorry, C and D, between C and D 20 20, between B and C is how much, this is 30, sorry, this is 30. So it is 10 and this is your in 5 in series. So 10 plus 5 how much, it will be your 15. And again
Again we will draw this diagram so that you can easily understand. And this is your how much, this is nothing but your series connection, so this is nothing but the 30, and this 30 is A2, where it A2, A2B, A2C. Okay, A2C is how much? 30. um Point to be noted, this is not any resistance. Why? Let me explain why it is not. From this diagram you can say A to C is how much? A to C is 30, 20 plus 10. A to C 20 plus 10. Okay, and again A to B, A to B is 40, B to C is 30. Okay, B to C, B to D is how much? B to D is 5, and C to D is 2 branches. C to D is 2 branches. Okay, this is your overall circuit. Okay, so again we will draw this one. How it will look like? This is A point, and this is your resistance of 30 ohm. There is a one more resistance of 40 ohm, and again this circuit in here, in this circuit, this is your again 30. Okay, 30 is there already. This is short circuited point, and again there is a resistance between these two of how much? This is your 10 plus 15, so it is 15. So 15 and 30 now is in parallel, so this parallel will be 30 into 15 by 45. So how much it will be? 10. So it will be 10 ohm resistance. So again we will draw, this is your B point. Now again we will draw, this will look like A, this is your B point, and this is your 40, and between here it is 30, and here it is your 10, only 10. So now this is your, let it be current I, this is I, this is I, this is I. So this is same current, means these two is again in series. So 30 30 30 plus 10 will be 40. So again we will draw this circuit. So this is A node, this is B node, and there is one resistance of 40 ohm, and one resistance is here of 40 ohm. So we are looking here R equivalent between AB. So now this resistance, these two resistance, that is, let the current be I here, I, then current will be divided between these two. So these two will be in parallel. So parallel, how much? 40 and 40 same, two resistance of the same magnitude is in parallel, so divide by 2, so it will be 20. So between A and B there is only one resistance of equivalent resistance, that is 20 ohm between A and B. So this is your answer. Between AB it is will be 20 ohm. This is very simple. Okay, so you need not to confused. Okay, similarly we can find out the resistance between B and C. How to find out the resistance between B and C? Let's see. Resistance between B and C, equivalent resistance between B and C, how much? By looking at the diagram, this is your main diagram, circuit diagram. In this diagram we are find out the resistance between these two terminal B and C, across B and C. So this resistance will be parallel with the equivalent. Okay, so in this diagram we can say it is also simplified. Here we can see this is your B, this is your C, across this one, so this is B, this is your C, again this one. We can
carefully looking at this point, this is again, this is also a same, so this is B and this is C. So from this we are looking at this terminal. So by considering the B and C, what we can say, this resistance, in this resistance, these two it will be in series and then that will be a parallel. So 10 and parallel with the 70, 10 parallel with the 70. So what we can redraw this diagram. Okay, so this diagram will be like this one. So this diagram will be like this one. 40, this is your 30, and this is your 10. We need to find out between these two terminal B and C, and AB is no use in this case. Okay, we are finding out the resistance across B and C. Okay, so in this what we can say, if this is current I, this is current I, this will be also I, and this will be also I, means same current. So it is in series. 30 and 40 is series, so equivalent will be 70, and that will be parallel with the your 10 ohm resistance, and so your equivalent will be here, R of BC. So R of BC will be equal to 10 parallel with the 70, and this can be also written as 10 into 70 by 80, and this will be equal to your 70 by 8, and this is your nothing but the 30 by 4. This is your simplified. You calculate the exact value of 35 by 4 value. Okay, this is clear now. Okay, so this is your simple circuit, simple numerical based on the your to find out the resistance between AB and BC. Now next question we will look. Next question is here. This is your again a voltage source V, and this is your resistance. Again there is one more resistance. Okay, then there is a current source, plus minus. No, this is voltage source. Q. Why it is a for voltage source? Because there is a marking of plus minus, and there is no current in this. Okay, so this is voltage source. 5 into I, whose magnitude is you 5 into I. Plus minus, this is again 50 volt, and this is resistance of 7 ohm, this is resistance of 5 ohm, and this is your voltage source of 4 volt. Okay, this is 5I, and this is, let it be 8 ohm. Okay, and this is the current marking I. Current marking is given like this one, I. Now tell me something, what we need to find out. Find I. What is the value of I in this circuit? Actually, from this diagram, tell me what is this one. This 5I. What is 5I? 5I is the source. Which source? It is the voltage, current dependent voltage source. What is this? Current. Because 5I is there, so this is a current. So depend this source, that is the voltage source. It is a voltage source, but depend on the current. Which current? This current. So it is a dependent source. Depend, because it depends on the other branch current. Current dependent voltage source. This is your current dependent voltage source. It is a dependent source. Okay. Now we will mark the polarity, means current direction या फिर sign. For example, this is 7 ohm, because current is rotating in this way. This is your I, this is again your I, this is current your I. So we will mark this as plus minus. Again here current is going from higher to lower, so plus minus. Again here plus minus. Okay, like this one we have marked. Okay, if you have any doubt, kindly comment in the comment section. Okay, now
Next is what? We will apply the KVL equation in this circuit, in this loop. KVL equation. Write KVL equation. This is simple. We will assume, what we will assume, if it is encounter in plus direction, we will take plus. Okay, because this is the loop current and it is, first of all, it is encountering this plus terminal, so we will write plus. What is the voltage across this resistance? V equal to R into I. R is 8 ohm, I is the I, so plus 8I. Okay, now here is nothing but the plus 5I, because it is encountering first plus, so we will write plus. And what is the magnitude of this voltage source? 5I. Why we have written KVL here? Because in this circuit all the sources are the voltage source, so we can easily write KVL. If there is a current source, then we need to convert current source into voltage source, then we will write KVL. Okay, if there is all the current source, then we will write KCL. If there is a voltage source, then if we can, if we will, if we will able to convert that voltage source into current source, then we can write KCL. Okay, so this is plus 5I. now here what will be? V equal to Ri. So Ohm's law will be 5 resistance into current is how much? I. Again, now again this is plus, it will be encounter where? Plus sign, so it will be plus. How much voltage? V, 4 volt. Again here plus Ohm's law, 7 R into I, current is I. And here minus, because it will be encounter where? Minus, so minus 50 equal to 0. So from this what we can write? We can write 8I plus 5I plus 5I plus 4 plus 7I equal to 50. Now on solving this one, we can find out the current value is equal to 2 amps. It will be 25I and that will be equal to 50. So it will be current equal to 2 ampere. It is very simple question. Okay, now we will see one more numerical. Okay, question is this one. Suppose this is your resistance, again there is one more resistance, and again there is a parallel resistance, and again a parallel resistance. Okay, again there is a parallel resistance. Okay, like this one. Now this is your voltage source. Okay, now this is, let it be 20 ohm, let this be a 40 ohm, and again let this be a 40 ohm, and again this will be a 10 ohm, and again this is 30 ohm resistance, and let this be voltage be 100 volt. Okay, DC. This, let be this current be I1. Okay, and let the voltage drop across this one is plus minus. Okay, V1, and let this current be your I2. Okay, 20, 40, 40, 10, 30, and then 100 volt. I1 is taken, I1, I2. Now we need to find V1 and I2. One important point is that in any circuit you can solve voltage, current, anything, any parameters by various methods: KCL, KVL, nodal, mesh, ohms, simplification of the circuit, and many more. So here we will basically solve by using the voltage or current division formula simply. Okay, now in this circuit what we can write? V1 and I2. How we will find this one? Tell me. How we can find out this one? First of all, tell me how much will be I1. How much will be I1? And point to be here, important point is that these two resistance is in parallel. So we will simplify this. And because of the simplification, 40 is parallel, so it will be how much? 20 ampere equivalent, 20 ohm, sorry, it will be 20 ohm. So we will redraw our circuit.
like this one. It is a simplified circuit. This is your 30 10, it is your 20, and again this one is 20. This is your I2, and this is your I1, and this is your 100. So tell me how much I1 will be voltage. How much voltage is there? 100 divided by V by R होता है ना, current. So 100 volt is supplied, and how much is the resistance, equivalent resistance? Again this is your 20 ohm. So this is your equivalent will be how much? 10, and this 10 will be series with this and this. So R equivalent will be equal to 30 plus 10 plus again this is equivalent to 10, so 10. So this will be 100 divided by 30 plus 20, 50, so it is 2 amps. 2 ampere current is I1. Now if I1 is 2 ampere, then what will be the value of I2? I2 is defined as the total current. How much? Total current I1 divided equal to, because I2 is flowing in this branch, so we will consider this resistance, that is how much? 20 ohm divided by total resistance, total parallel combination resistance, that is how much? 20 plus 20, 20 plus 20, that is 40. So it will be 2 into 20 by 40. How much it is? 1 ampere. Or we can say, as this is your, how much current is this one? It is 2 ampere. Because the resistance in the both the branch 20 is same, so the current will be divided equally. 1 ampere will be in this branch, 1 ampere will be in this branch. So it is I2 is 1 ampere. Now I1 is already not 2 ampere. So what we can write about the V1? V1, because the current is flowing like this one, so it should be plus minus according to 10 I1. But V1 is a reverse, so we will write minus of 10 into I1. So how much it will be? Minus 10 into how much I1? I1 is 2, so it will be minus 20. Unit of the voltage is volt, so minus 20 volt. Okay, I1 is 2 ampere, I1 is 2 ampere, I2 is 1 ampere. So this is simple numerical based on your current division and the current division formula. Okay, if you have any doubt, kindly comment in the comment section, and do not forget to subscribe this channel. Kindly subscribe this channel, one stop for all, for getting the latest update instantly. Okay, now we will move for the second topic, that is second or third topic, I think. What is the second or third topic? Star to delta conversion. स्टार का शेप कैसा होता है ये बताइए. स्टार इज लुक लाइक दिस वन, डेल्टा इज लुक लाइक दिस वन. सो स्टार टू डेल्टा हम लोग को कन्वर्ट करना. मान लीजिए कोई भी रेजिस्टेंस आपको स्टार में दिया है, मान लीजिए इस टाइप से, मान लीजिए कुछ रेजिस्टेंस है स्टार में, मान लीजिए कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस है, ठीक है. लेट इट बी एक्सप्लेनिंग. लेट द रेजिस्टेंस इन स्टार इज लाइक दिस वन. Okay, this is your star connection RA, let it be RB, let it be RC, and this node be A, this is B, and let this be C. Okay, now this will be connected to circuit, okay, like this one, like this one. This will be connected to some circuit. Okay, this is your resistance, and this type of configuration is known as star connection. Okay, this is known as star. Okay, in this star, this is will be a node, let it be node name is N. This is your star type configuration. What about the delta? In delta format will be like this one. So delta, let it be like this one.
let this be R of AB. One more resistance is here, let this be RCA, and one more resistance is here, let this be R of BC. ABC, and this is known as your delta connection. Okay, in delta connection there is a 3 node. In a star connection, how many nodes? There is a 4 nodes. Why 4 nodes? A, B, C is the 3 nodes, and one extra node is this point N. Okay. Okay. Understand, na? Okay. So this is your star. This is your star connection, and this is your delta connection. We will learn how to convert it. Suppose this your star connection is there given, then how to convert a star to delta, or means from this circuit to this circuit, how to convert. Means if the connection is given in the form of a star, then we should able to convert into delta connection. Similarly, if there is a delta connection is given, then we need to we will be able to convert into a star connection, and vice versa. We'll see how we will convert. Okay. Now, in this simple concept is equating resistance between the node पेयर. जितना भी नोड पेयर है सबको हम लोग इक्वेट करेंगे, और उससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कि कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल let's see the derivation. Okay. We will see first delta to स्टार कन्वर्सन. डेल्टा से स्टार हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. नाउ इक्वेटिंग रेजिस्टेंस बिटवीन नोड पेयर्स के बीच में हम लोग इक्वेट करेंगे. फर्स्ट कौन सा नोड पेयर है? नोड पेयर ए को हम लोग देख रहे हैं. तो किससे? डेल्टा टू स्टार. मीन्स पहले हम लोग ये डेल्टा को देखेंगे, और तो ए बी के बीच का पेयर क्या हो जाएगा? ए बी के बीच में वी विल ड्रॉ अ डायग्राम. ओके, वी विल सी दिस वन. नोड पेयर ऑफ ए बी. सो नोड पेयर ऑफ ए बी बताइए क्या होगा? टेल मी. नोड पेयर ऑफ ए बी. चलिए स्टार में बताइए क्या होगा. पहले आप स्टार कहीं देखिए या डेल्टा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टार में देखिए क्या होगा ए बी के बीच में ना. तो कुछ इस तरह से होगा. ए बी के अक्रॉस देखना है, ठीक है, रेजिस्टेंस. ये स्टार कनेक्शन है. ये ए हो गया, ये बी हो गया, आर ए आर बी आर सी. मीन्स ए और बी, इसके अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस देखना है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ये स्टार कनेक्शन है, तो क्या हो जाएगा बताइए? आर ऑफ इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी के अक्रॉस क्या होगा? ये दोनों इधर से देख रहे हो आप, ठीक है. तो मान लीजिए इसको क्या मान लेना? ओपन. ये जो सी नोड है इसको छोड़ दीजिए, इसको ओपन मानना है, ठीक है. तो ये दोनों को देखेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए ए से करंट जा रहा है, इधर में जा रहा है, इधर तो ओपन है, सी में तो जाएगा नहीं करंट. ये करंट जाएगा, और यही करंट सेम करंट बी में जाएगा, और बी से बाहर जाएगा. तो ए एंड बी क्या होगी आपको सीरीज में? सो इट विल बी आर ए प्लस आर बी. सिंपल, ठीक है. अब डेल्टा में बताइए क्या होगा डेल्टा का ए बी? इधर में है आर ऑफ ए बी,
आर ऑफ सी ए और आर ऑफ बी सी। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा, यदि मान लीजिए ए बी, ए नोड है, ये बी नोड है, इसके अक्रॉस देखना है ना, तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट ऑफ ए बी ऑफ डेल्टा, ये किसका है, डेल्टा, ये किसका था, स्टार का, डेल्टा का क्या होगा बताइए जल्दी, आर ऑफ ए बी हो जाएगा और इसके पैरेलल में ये सीरीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो सेम करंट है, तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज, लेकिन ये दोनों सीरीज होगा, लेकिन किसके साथ पैरेलल, इसके साथ पैरेलल। सो व्हाट वी कैन राइट, आर ऑफ ए बी इज पैरेलल विथ आर ऑफ बी सी प्लस सी ए, एनी डाउट, एंड दिस इज योर इक्विवेलेंट ऑफ आर इक्विवेलेंट ऑफ ए बी। ठीक है, नाउ this can also be written as how much, r of ab into r of bc plus ca by r of ab plus r of bc plus r of ca. Okay, this is your equation number 1, means this is equal to your this resistance. Okay, this is your equation number 1. Now similarly we will go for the node pair b and c. We will look for the node pair बी सी, बी एंड सी का नोट पेयर में देखेंगे तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्वल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, आर बी प्लस आर सी इक्वल टू आर ऑफ बी सी पैरेलल विथ आर ऑफ सी ए प्लस आर ऑफ ए बी, एंड दिस विल बी इक्वल टू योर आर ऑफ बी सी इंटू आर ऑफ सी ए प्लस आर ऑफ ए बी डिवाइड बाय आर ऑफ ए बी प्लस आर ऑफ बी सी प्लस आर ऑफ सी ए. This let this be the equation number 2. Similarly we will equate the resistance across the node pair of AC or CA. In this case the same, C plus A equal to R of CA parallel with R of AB plus R of BC. You can redraw the diagram, and for the understanding purpose you can redraw the diagram, and then you can find out the values. Okay, AB plus BC divided by RAB plus RAB plus RBC plus R of CA. Denominator of all the three equation is same. Important point is here, that one. Okay, now we will do the mathematics, equation number 1 minus equation number 3. Then what we can write, r of b minus r of c, and that will be equal to how much, you need to calculate in your notebook. It will be bc minus ca r of bc divided by how much, r of ab same, r of bc plus r of ca, all summation. So let this be equation number 4. Now we will do the maths operation, equation number 2 plus equation number 4. So this will be equal to equation number 2 plus equation number 4. We will add equation number 2 and 4. Equation number 2 is here, equation number 4 is here. We will add these two. After adding, what we will get, c and c will be cancelled out, so only will be r of b, 2 r of b. But after, because 2 and 4 if you add, then also 2 will be cancelled out. You can do the in notebook. So it will be r of ab, r of bc divided by r of ab plus r of bc plus r of ca. Okay, now let this be equation number 5. Now similarly, if you know the value of rb, then you can simply put the value of in 2 or 4 and find out the value of rc, and that will be equal to rca rbc divided by total resistance rab plus bc plus ca. Let this be equation number 6. And similarly, if you know the value of b and c, then you can easily find out the rm by putting in the above in any equation, then you will get r of a equal to rab into ca by r of ab plus r of bc plus
R of CA. So this is number equation number so. So if you know the value of delta टू स्टार ना, मीन्स डेल्टा में आपको यदि वैल्यू पता होगा ये वाला तो आप इसको स्टार में इस टाइप से सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आर ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर ऑफ ए का वैल्यू डेल्टा टू स्टार कर रहे हो आप, डेल्टा टू स्टार तो प्रोडक्ट अपॉन सम करना, प्रोडक्ट अपॉन PUS, प्रोडक्ट अपॉन सम। प्रोडक्ट अपॉन सम का मतलब क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, ये वाला रेजिस्टेंस ना आर ऑफ ए, मीन्स ये कुछ इस तरह से होगा, ये वाला रेजिस्टेंस निकाल रहे हो तो ये और इसके मीन्स जिसके अक्रॉस है ये, मीन्स एक CA जो नियरेस्ट है, CA एंड AB, इस दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा CA इंटू AB डिवाइडेड बाय टोटल, मीन्स सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस, मीन्स CA प्लस AB बाय BC, जो कि मैंने नीचे कैलकुलेट किया है, ठीक है। AB इंटू CA, R ऑफ A इक्वल टू AB इंटू CA। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द RB बताइए क्या होगा, RB मीन्स किसके अक्रॉस है, B से है, B और ये वाला यहाँ का निकालना वैल्यू, तो ये इंटू ये मीन्स R ऑफ AB इंटू R ऑफ ये क्या है BC डिवाइडेड बाय सम। सिमिलरली फॉर RC यू कैन इजीली फाइंड आउट, ओके। यहाँ पर मैंने ये क्या है, लेकिन वो ट्रिक हो गया। ट्रिक क्या है, जो भी ये आपका ये रेजिस्टेंस निकालना है तो इस दोनों का प्रोडक्ट, ये निकालना है तो इस दोनों का प्रोडक्ट, ये निकालना है तो इस दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल, मीन्स प्रोडक्ट अपॉन सम। डेल्टा टू स्टार का हुआ, oh delta to star, so we need to change the logos like this one, delta to star like this one, okay, and this is your star to delta, star to delta. For star to delta, what is the trick, sum of product upon remaining, sum of product upon remaining. What it means, star means this circuit will be given, you need to find out the delta, means equivalent of this one will be like this one, means this resistance, suppose this resistance your will be R of BC, suppose you need to find out the R of BC. How you will find out, sum of product upon remaining. Remaining means what, if you are find out the RBC, opposite is what, RA, so remaining means opposite, that is R of A, opposite you need to put, okay, opposite you need to put, and the product, sum of product means RA into RB plus RA into RB plus RB into RC plus RC into RA, मीन्स सभी का सम और प्रोडक्ट करके सम करना है, डिवाइड बाय अपोजिट वाला जो रेजिस्टेंस होगा, दैट इज विल इज BC. व्हाट अबाउट द BC, ओके, नाउ CA, टेल मी CA, अबाउट द CA मीन्स दिस रेजिस्टेंस अपोजिट इज RB, सो डिवाइड बाय R of B, एंड ऊपर प्रोडक्ट ऑफ सम, okay. Similarly you can find out the others, okay. This is very simple calculation trick, okay, this is your simple trick, okay. And important thing, okay, understand na? Now we will see how to convert star to delta. I have already told the shortcut how to find the star to delta here by simple tricks, okay. We will see the derivation, okay. Star to delta, add, now for the star to delta what we will do, we need to equation number 5, we will simply mathematical calculation, 5 into equation number 7, equation 5 into 7, what it will be, RA into RB equal to how much, R of AB square into BC into R of CA divided by R of AB plus BC plus R of CA, and this will be
whole square. Okay, so let this be equation number 8. Similarly, multiply equation number 5 into 6, then this will be r of b into r of c, and this will be equal to r of bc square into r of ab into r of ca, and this divided by same, that is r of ab plus bc plus r of ca whole square. This let be equation number 9. And similarly we will do for the equation number 6 into 7 product, and that will be rca into ra. That will be, I have solved in this process, but you can solve in other method you can use to solve, but solve the questions or numericals in a shortest way by whatever method you want. But in the question paper, if they mention that you need to use this method specified, then you need to use that specific method. Okay, so this is your ca square, and let this be equation number your 10. Okay, now add equation number 8, 9 and 10. Add all equation 8, 9, 10. After adding, what we will get? R of a, r of b plus r of b plus r of c plus r of c plus r of a, and that will be equal to how much? Tell me. It will be r of ab square into r of bc, r of ca plus r of bc square again, r of ab, and then r of ca plus r of ca square into r of ab, r of bc, whole divide by this one, divide by that same, that is r of ab plus bc plus ca whole square. Okay, let this be equation number 11. Now after this one, just we need to simplify this one. Okay, how we will simplify this one? This one is equation number 11. You need to simplify this one. If you take the common from here, the same will be cancel out, so one will be cancel out. So what we can write? R of a into r of b plus bc plus ca equal to how much? R of ab, r of bc, r of ca divided by r of ab plus r of bc plus r of ca. Okay, so let be this be simplified of this one. Simplified of this one is simple equation number 12. Now we will do equation 12 divided by equation number 7. Divide. Okay, then what will be? Equation 12 is here. Where is equation number 7? Ra. Means simply we will divide by Ra. Ra means we will simply divide by Ra. Okay, so if you divide Ra, then this portion will be cancelled out. This will be your ratio, and from this what we will get? R of bc equal to r of a into r of b plus r of b into r of c plus r of c into r of a divided by remaining, that is bc means a. Okay, this is your r of bc. This is your conversion of star to delta. Now similarly we will divide equation number 12 divided by equation number 5. 12 by 5, and this will be equal to r of ca, and that rca equal to r of a into r of b plus r of b into r of c plus same, that will be same divided by opposition, that is ca is the given, so it will be opposite means rb will become. Simple trick. Okay, equation number 5, and then we will divide equation number 6, equation 12 by 6, and that will be give you r of ab, and that will be equal to same as above, rb plus rb into rc plus rc into ra divided by r. Ab is given, so it will be c.
So this is your simplified, or we can say derivation or proof. So this is your proof for star to delta conversion. Okay, understand? If you have any doubt in this section, you can comment in the comment section, and do not forget to subscribe this channel one stop for all for getting the latest update. Okay, now this is clear na, derivation of the star delta. And I also explain the tricks. I also explain the trick, means how to find out that one. Okay, now we will go for the balanced star delta conversion. Star delta conversion. Okay, balanced means what? Balance means all the impedance, load means resistance will be equal. Means for the star, Ra equal to Rb equal to Rc equal to R. For the delta, R of AB equal to R of BC equal to R of CA equal to let R delta. Okay, and this be R star. So for the balance star delta, or we can say all the, if the all the resistance are equal, then for conversion from delta to star will be delta how many words, 3 to 5, and star only 4. 5 to 4, 5 to 4 means 5 means what? Delta is more powerful, delta will be more powerful. So our delta will be, because it is more value will become, so 3 times of R star. Means it is a simple trick. Means delta is 5 words and star is only 4 words. So for the conversion delta to star, R delta will be more, so it will be product of 3 times of R star. Or you can simply put the values in the above equation, and you will easily calculate the value of R delta or R star. So for the balance circuit, simply we will change the value of 3, means simply we will divide or multiply by factor 3. Okay, now we will see our numerical. Solve this question. Okay, this is this question, and use the concept of star delta conversion. Okay, let this be a 4 ohm resistance, and let this be 8 ohm resistance, let this be 12 ohm resistance, let this be 2 ohm resistance, let this be 4 ohm, and let this be 3 ohm, and let this be node be A, this node be B, and this node be your C, and this node be D. Now find the resistance R between A and D. Between A and D, where is A and D node? We need to find the resistance between A and D node. A and D node, where is A node is here, where is D node is here. In between this one we need to find out the resistance. So what we will do, this circuit here, it is a star connection. How it is a star connection? See, this is simply a star connection. You need not to see anything. A, B, and this be a C node. Okay, it is a 4, it is a 8, and it is a 2. It is your star. Now for the equivalent of this resistance will be how? Tell me. Equivalent of this resistance will be this. Equivalent of this resistance will be like this one, delta, like this one will be like this one, and other will be like this one. This will be your delta connection. Okay, this will be your delta connection, and means one resistance will be here, one resistance will be here, and one resistance will be here. Okay, between A and C already given 4. So after this resistance will come, this will be act as a parallel with this one. If this resistance will come,
this will be act parallel with this one, and this resistance will come, then this will be act as a parallel to this one, and then we can simply solve. Okay, so what will be this resistance? Tell me. This resistance, we are converting star to delta, means sum of product upon remaining. Sum of product is how much? Sum of product equal to how much? Sum of product 4 into 8 32 plus 8 into 2 16 plus 4 into 2 8. How much is this will be? This will be 56. So 56 divided by remaining. Remaining means opposite wala, that is 2. So divide by 2. So this will be your 28. Similarly, this will be how much? Total is 56 divided by opposition वाला. C and D का opposite कौन सा है? 4. So divide by 4. So this will be how much? 14. And this will be 56 divided by opposition, that is 8. So it will be 56 by 8 is 8 7. So this is your equivalent. So now we will again redraw a diagram. This is A node. Between A and C there is a calculated value is 28, but there is one more resistance in parallel which is 4 ohm. So we need to write here 4 ohm. Now B, A and C is okay. Now there is another point, that is D. So we need not to omit this one, D. So there is a resistance between D, how much we have calculated, that is 14, and from A to D is how much? This is calculated is 7, but between A and D another resistance of 3 ohm. So there will be a one more resistance of 3 ohm across this one, 3 ohm, and across C and D is one more resistance of 12 ohm. So across this one more resistance of 12 ohm. We need to find out the resistance between A and D, like this one, A and D. So now from this circuit what we can see is that this is a parallel combination, this is again a parallel combination, again this is parallel combination. Okay, and this, so what is the equivalent of this parallel? 4 into 28 by 32, 4 into 28 by 32, how much? It will be a 3.5. How much parallel? 14 into 12, 14 into 12 by 26, so it will be 6.46. How much it will be? 3 and 7 is parallel, so it will be 3 into 7 by 10, so it will be 2.1. So simplified version will be like this one. This is A version, this is your D node. Okay, in this A, from A node there is a 3.5 ohm resistance, then again A to C, this is your C node, and again between C and D, again between C and D, see there is a resistance of 6.46. again your between A and D there is a one more resistance of 2.11. From this circuit again we can say this 3.5 and 6.4, this is your series connection, because current is not dividing. So this series will be this series will be how much? 9.961, and in parallel, and this will be parallel with this one, 2.1. So R of AD will be equal to 2.1 parallel with 9.961. So this will be equal to how much? 1.734 ohm. Okay, this is your simplified circuit, how to convert. This is a simple numerical which is based on the star to delta conversion and vice versa. Okay, so we have discussed the star delta conversion formula, derivations, then we have solved the voltage division and the current division formula, then we have seen the parallel combination and series combination of the resistor. Okay, so in this portion we have discussed the fundamental of the resistive circuit, series and the parallel, then star delta conversion and some numericals. So in the next lecture we will discuss the next topic, that is the mesh and the nodal analysis. Okay, for this time I'm ending this lecture.